हाँ सर हाँ एबे एबे क्लियर अछि एबे एबे क्लियर अछि वॉइस ठीक अछि ठीक अछि गुड इवनिंग चंदन प्रणाम अच्छा तो मु कहूली एया जे प्रीवियस क्लास रे जेमिति हमें सेल और सेल साइकिल सेल डिवीजन रो क्वेश्चन डिस्कशन करथिले आज रो सेशन रे सेमिति हमें एक्सक्रीशन रो क्वेश्चन डिस्कशन करबा हैला आ एक्सक्रीशन क्वेश्चन बा एक्सक्रीशन रो पोर्शन भितरे कोन कोन इंक्लूड रहइबो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी याडे यूरिन रो फॉर्मेशन ता संगे काउंटर करेंट मैकेनिज्म आउ किछि किछि जदि डिसऑर्डर्स हमर एसोसिएटेड हेगिरि अछि हम यूरिन फॉर्मेशन रो प्रोसेस रे से सब जिंस मध्ये हमर ए जगह रे इंक्लूड करा जिवो हैला नाउ ऑल गुड ठीक अछि तो ए सब कंटेंट उडा आज हमें कवर करबा आज रो क्लास रे तो स्टार्ट करबा फर्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस रेनल पेल्विस कलेक्टिंग डक्ट कौन होगा करेक्ट आंसर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी देखो structural and functional unit of any part of the body is the cell say particular part ro ba say particular organ ro cell ta ko तार structural and functional unit बोली कहा जाउची जोटारे की आमे कोन कहउचे ना किडनी रो समिति structural and functional unit हला नेफ्रॉन किडनी रो structural and functional unit हला नेफ्रॉन ठीक अछि अच्छा दिनरो 8 दिनरो संघर्ष परे को 8 दिन संघर्ष थिला चंदन खाई आसीबो क्लास करियो अच्छा हो ठीक अछि त एडा हला नेफ्रॉन ठीक अछि नेफ्रॉन रो जति स्ट्रक्चर देखिबा ए टाइप रो रहउची ए टाइप रो स्ट्रक्चर रहउची अच्छा एठी हमर किछि हमर कैपिलरीज उडा को आसुची एठी बाहरची एडा हला एफरेंट आर्टेरियोल ये हला इफरेंट आर्टेरियोल ये हला हमरो ग्लोमेरुलस ये होची बोमेन्स कैप्सूल ये होची पीसीटी ये हला कलेक्टिंग डक्ट सॉरी कलेक्टिंग डक्ट कहै दिले एडा को एडा होची लूप ऑफ हेनले ये हला डीसीटी और ये हला कलेक्टिंग डक्ट ठीक अछि अच्छा अच्छा हाँ 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 ओ नोटिफिकेशन कथा कहूछ कि हाँ हाँ ठीक 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 अछि हौ देखो नोटिफिकेशन तो आसी जीवो ताहले तो बहुत ही भलो कथा हला नोटिफिकेशन आसीबो चांसेस बढ़िबो समस्त को ये हबो बट एबे प्रिपरेशन मते सेति की जोरे सेति की स्ट्रांगली करियो पड़िबो हला ठीक 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 अच्छा तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन डन नेक्स्ट The renal corpus will consist of PCT and DCT, glomerulus and Bowman's capsule, loop of Henle and collecting duct, renal pelvis and calyx. कौन हम renal corpuscle कौन कह जाउची सेटा को आमे जो नेफ्रॉन रो स्ट्रक्चर टा करिथिली सेठी हमर जो ए जो Bowman's capsule थिला आ Bowman's capsule भितरे एमिति हमर glomerulus पडिथिला ठीक तो ए जो एडा हला glomerulus आ ये हला Bowman's capsule ए दीटा मिसिगिरी होचंदी हमर कोन ना रीनल कॉर्पस्कल्स रीनल कॉर्पस्कल एडा होचे हमर सॉरी ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर ग्लोमेरुलस एंड वुमेन्स कैप्सूल ठीक अछि हां सीटी एडमिशन करि देबाडा जयते तमे जदी पीजी रो एडमिशन करि सारछ देन बेटर टू गो फॉर पीजी कला पर तमर बीएड जदी कंप्लीट हेची ताहले तमे सीटी करिया किछि दरकार नै बीएड जदी हेई जायछि ताहले सीटी दरकार नै बाकी तमे फिर भी टीचिंग लाइन में जीवा को चाहौ छ ताहले सीटी करि कि तमे जाई परिबो बी बी ठीक अछि नेक्स्ट which part of the nephron is responsible for maximum reabsorption of the filtrate which part of the nephron is responsible for the maximum reabsorption of the filtrate
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ना कलेक्टिंग डक्ट? हाँ हाँ सब अपलोड हम सब प्लेलिस्ट ठीक रहिबो हैला। देखो मैक्सिमम रिअब्जॉर्प्शन पाई बोली किए रिस्पांसिबल हमर ए जो नेफ्रॉन रो ए जो पीसीटी पोर्शन टा जहाँ सब फिल्ट्रेट हमर एठी आसी जाइतिला से सब फिल्ट्रेट हमर पीसीटी रे मैक्सिमम माने 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज अगेन रिअब्सॉर्ब्ड इनटू आवर बॉडी ठीक अछि। अच्छा तो एठी हमर पीसीटी रे कोन एमिदी अछि जे एठी मैक्सिमम रिअब्सॉर्प्शन होछि एठी हमर brush bordered cuboidal epithelium brush bordered cuboidal epithelium रे हमर लाइन हिगिरी अछि जा द्वारा कि एठी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हे जाउछि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हे जाउछि। तो एटा इज योर आंसर पीसीटी हैला पीसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 4 which sequence correctly represents the flow of filtrate after the Bowman's capsule? Bowman capsule पर कुड़ी 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 के जाउची हमर फिल्ट्रेट ता देखो Bowman's capsule जोटा कि फर्स्ट डायग्राम रे देखथिले Bowman's capsule कैपिलरीज रो Bowman's capsule आसिले तापर से पीसीटी को गला तापर लूप ऑफ हेले तापर डीसीटी तापर कलेक्टिंग डक्ट ठीक अछि। तो ए सीक्वेंस रे जाउची तो से सीक्वेंस अनुसार देखि दबा देखो Bowman's capsule पर पीसीटी थिला पीसीटी एठी अछि और पीसीटी एठी अछि तो ए दिटा तो ऑप्शन कटि गला पीसीटी पर डीसीटी न थाए लूप ऑफ हेले थाए ए ऑप्शन हैला पीसीटी पर लूप ऑफ हेले डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट ए सीक्वेंस रे हमर फिल्ट्रेट रो फ्लोटा एठी देखा जाउछि फोटा डी हबो सुबस्मिता यस। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट occurs primarily by ultrafiltration, active secretion, tubular reabsorption ना osmosis। फॉर्मेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रो माने होची जोटा कि हमर ग्लोमेरुलस द्वारा प्रोड्यूस हेकरी Bowman's capsule हेकरी पीसीटी आडू आसुतला ये हला afferent arteriole ये हला ग्लोमेरुलस जोटा कि हला कोटे टफ कैपिलरी ता ये हला efferent arteriole एठी जते बेले हमर फिल्ट्रेट ता प्रोड्यूस होची ना सते बेले केते रेट रे फिल्ट्रेट ता प्रोड्यूस होची जानचो 125 मिलीलीटर पर मिनिट रेट 125 मिलीलीटर पर मिनिट रेट रे ठीक अछि जोटा कि जते बेले हमें सम अप करी पर डे बेसिस रे देखिबा इट रेंजेस अप टू 180 लीटर पर डे 180 लीटर्स पर डे ठीक अछि। तो एते हाई रेट रे जहा सब फिल्ट्रेट आसी थाउची एक्सेप्ट आरबीसी आउ प्लाज्मा प्रोटीन्स आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन्स को छाड़ी देले अब किछि रहउनी सब गुडा फिल्ट्रेट रे आसी जाउची सब गुडा फिल्ट्रेट रे आसी जाउची ठीक अछि। तो एडा ही जो हमर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जोटा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोली कहा जाउची यस चंदन अनिशा यस सुबस्मिता ए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट which structure forms an important component of the filtration barrier of the renal corpuscles? Collecting duct, glomerular filtration membrane, renal pelvis, loop of Henle कौन हबो important component of the filtration barrier filtration हमर जो होउची filtration हमर जो होउची एठू हमर Bowman's capsule रो आरंभ करी करी हां एपटे हमर जो कैपिलरीज द्वारा हेगरी filtration ता जो होउची एठी हमर से filtration ता केमिदी होउची ना we see ए टाइप रो किछि हमर जो फिल्ट्रेशन ता होउची इट इज बिकॉज़ कि एठी हमर स्लिट लाइक पोर मेम्ब्रेन्स उडा एमति प्रेजेंट अछि इन द मेम्ब्रेन्स उडा प्रेजेंट अछि। तो ए जो स्लिट लाइक पोर उडा कोन एडा को जाउची पोडोसाइट्स एडा होची पोडोसाइट्स ठीक अछि। तो एडा होची ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 which part of the loop of Henle is highly permeable to water? तो आमे जदि लूप ऑफ हेनले कथा कहिबा लूप ऑफ हेनले होची हमर पीसीटी रो पोर पोर्शन दा पीसीटी रो नेक्स्ट पोर्शन दा होची लूप ऑफ हेनले जोटा कि हमर दीटा सेगमेंट्स रे हमर डिवाइडेड हेगि अछि गोटे होची एठू हमर ऊपर तळु आसुची जेहेतु एटा होची हमर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आ एठू हमर फिल्ट्रेट एमिति फ्लो करूची जेहेतु एटा होची असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ठीक ए जो पोर्शन रे ए जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले रे जगह जगह रे हमर एक्वापोरिन्स उडा प्रेजेंट होची जोडा कि वाटर चैनल्स उडा एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होची व्हिच आर द वाटर चैनल्स। अच्छा तो ए जो वाटर चैनल्स देगिरी कोन जिबा से हेई परबो तमे निजे चिंता करो पानी जिबा से हेई परबो ऑब्वियसली। तो एटी पानी जिबा से हेई परछ माने दिस रीजन दिस असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज permeable to water but
impermeable to salt, but impermeable to salt. ठीक अछि. Coming towards the next question जोटा कि हमर ascending limb of Henle बोली कहूचे सेटा होची आर उल्टाडा माने एरा जदि हमर वाटर पाइन बोली परमिएबल और सॉल्ट पाइन बोली impermeable बोली कहले एरा होची हमर सॉल्ट पाइन बोली परमिएबल और वाटर पाइन बोली impermeable. So this segment is salt impermeable. अरे रे से या कथा लिखले होत वाटर को impermeable to water ଆଉ permeable to salt, permeable to salt. ठीक अछि. तो ए टाइप रो जदि हमें देखिबा ताहले कोडा हमर permeable to salt, it is descending limb of loop of Henle हला. सी yes C होबा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आसो. The ascending limb of loop of Henle is characterized by high permeability to water, secretion of glucose, production of erythropoietin, reabsorption of sodium with low water permeability. देखो ascending limb कथा जोटा कि हमर A limb ता it is impermeable to water and permeable to salt. low water permeability एडा ही परिबो. high permeability to water नहीं, secretion of glucose नहीं, एडा नहीं. ऑप्शन नंबर डी हला. तो सॉल्ट पाइन बोली परमिएबल बाकी वाटर पाइन बोली परमिएबिलिटी ना नहीं. इम्परमिएबल टू वाटर या फिर लो लेस परमिएबल टू वाटर. ठीक अछि, लेस परमिएबल टू वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. The countercurrent mechanism of the kidney primarily involve loop of Henle and vasa recta, ECT and DCT, glomerulus and Bowman's capsule, renal, pelvis and ureter. कोन होची जो हमरो लूप ऑफ हेनले कथाटा हम देखुथिले लूप ऑफ हेनले रु ए टाइप रो हमरो फ्लोटा देखाउची लूप ऑफ हेनले रो. तो ए टाइप रो जो फ्लोटा देखाउची हमरो ए कैपिलरीज रु बाहरी गिरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज रु बाहरी गिरी कोटे हमरो कैपिलरी रे एमिति भी फ्लो देखाउची जोटा कि तारो काउंटर रे जाउची तारो उल्टा फ्लो रे जाउची. ठीक अछि. तो एठी होची हमरो लूप ऑफ हेनले आ एठी होची हमरो वासा रेक्टा. ए दुईटा मझिरे हमरो काउंटर करंट मेकानिज्म देखा जाउची. आउ ए जो फेनोमेनाटा बा ए जो मेकानिज्म दा इट regulates the urine concentration. urine रो concentration को ये हमरो रेगुलेट करिगिरी रखुछ. तो एटा लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर ए हेबो चंदन. ठीक अछि. बी काहे हबो बी हबनी सुबस्मिता. आंसर विल बी ए हला. लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा मझिरे हमरो काउंटर करंट मेकानिज्म रेगुलेट होछ. नेक्स्ट. The major function of the vasa recta in the urine concentration is to filter the blood plasma, maintain the medullary osmotic gradient, produce ADH, and secrete renin. कौन हबो मेजर फंक्शन ऑफ vasa recta? vasa recta रो मेजर फंक्शन कोन? मेजर फंक्शन होचे to maintain the osmotic gradient, maintain the medullary osmotic gradient. मेडुला भितरे जेतु हमर डीपली एम्बेडेड हेगिरी रहउची लूप ऑफ हेनले टा. तो मेडुला भितरे हमर जो osmotic gradient टा माने सॉल्ट और वाटर रो जो बैलेंस टा बॉडी रे जो मेंटेन हेकि रहबा कथा से जिंसटा जे मेंटेन करके रखुची बोली कहले एठी हमरो के हे जिवो वासा रेक्टा रो प्रेजेंस जो सेटा हमर डीपली एम्बेडेड हेगिरी पूरा जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स रो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखुची. नेक्स्ट. Which hormone increases the water reabsorption in the collecting ducts? Aldosterone, renin, ADH, atrial natriuretic peptide. Yes. एडा जिवो ADH. देखो कोन करची वाटर रिअब्सॉर्प्शन करूची. ठीक अछि. टेनडा हबो बी बी काहे हबो रेनिन वाटर रिअब्सॉर्प्शन पचरची. अच्छा 10 दा कोथलो बी. अच्छा एडा 11 नंबर ता. ठीक अछि. ADH हला एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर एडा को वैसोप्रेसिन बोली मध्ये कुहा जाउची. वैसोप्रेसिन बोली मध्ये कुहा जाउची. अच्छा तो ए कंडीशन रे कोन होउची कोडी एडा कोड रिलीज होउची. इट इज released from the neurohypophysis. और ये neurohypophysis टा कोन? It is the posterior lobe of pituitary gland. posterior lobe of pituitary gland. ये कौन करची ना हमारा
वाटर रिअब्जॉर्प्शन टा वाटर रो रिअब्जॉर्प्शन टा सेटा को से बढ़ाउची ठीक अछि आ जदी हम एडीएच रो लेवल जदी बॉडी रे कम देखिबा ताहाले हमरो frequent urination देखा जिवो and this is a condition जोटा को की कुहा जाउची कोन ना diabetes insipidus बोली कुहा जाउची ठीक अछि हां आसी गलो अच्छा ठीक अछि हो तबे आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 12 ADH increases water reabsorption in the collecting duct mainly by increasing the sodium secretion, increasing the glucose filtration, increasing the urea synthesis, promoting the insertion of aquaporin to channels. Yes. कौन करछि aquaporin channel गोटे हमर प्रेजेंट थिला जोडा कि descending limb of embryo descending limb रे ऑलरेडी गोटे प्रेजेंट थिला एबे जते बेले एडीएच रे सिक्रेशन हमर होउची ना सेते अधिक रो अधिक हमर वाटर को परमिएबल हेबा दरकार हैला वाटर को परमिएबल हेबा दरकार तो सेठी हमर aquaporin channel उडा को मध्ये अधिक रो अधिक इंसर्ट हेबा दरकार आ एडीएच हमर मेनली ऐड करछि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट ऊपर तो सेठी तो हमर aquaporin प्रेजेंट न थाउची फर्स्ट द चैनल्स आर बीइंग इंसर्टेड देन अगेन तापरे हमर वाटर रो अब्जॉर्प्शन हेबा आरंभ होची तो एठी ऑप्शन नंबर डी हिजबो करेक्ट आंसर 12 हिजबो डी ठीक अछि सुभस्मिता चंदन नेक्स्ट aldosterone primarily causes increased sodium reabsorption and potassium secretion, increased potassium reabsorption and sodium secretion, increased water secretion, and increased glucose filtration. कौन होगा? Question number 13. Yes. 13. Aldosterone ला कोड प्रोड्यूस होची aldosterone ला होची कोटे कॉर्टिकल हार्मोन adrenal gland रो cortex region रो पुनी जोना glomerulosa region रो हमर कोटे हार्मोन सिक्रेट होची जोडा को की कोटे मिनरल कॉर्टिकॉइड बोली कुहा जाउची और ये मिनरल कॉर्टिकॉइड टा किछि नुहे इट इज aldosterone ठीक अछि अब ये aldosterone टा कोन करछि इट इंक्रीजेस द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रेशन सोडियम रे रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ौछ और पोटेशियम रे सिक्रेशन टा को बढ़ौछ ठीक अछि तो एरा हला हमर aldosterone रो फंक्शन aldosterone रो फंक्शन 3 टा हला a 13 टा हला a नेक्स्ट 14 renin is secreted mainly by podocyte juxtaglomerular cells principal cell macula densa cells कौन होगा क्वेश्चन नंबर 14 रेनिन RENIN कथा कहछि देखो हमरो juxtaglomerular cells रो रेनिन हमरो रिलीज होछि ठीक अछि रेनिन हमरो रिलीज होछि देखो म एडा को कहि दोछि आर कोन पूरा मेकैनिज्म दा आ ए रेनिन रो फेनोमेना रो हमरो रास मेकैनिज्म चले ठीक अछि अच्छा तो एठी हमरो कोन रहउछि ना juxtaglomerular cells रो रिलीज होची रेनिन ठीक अछि आ ये एबे कोन करछि ना एंजियोटेंसिनोजेन को जोटा कि हमरा लिवर रे प्रोड्यूस है कि ब्लड रे प्रेजेंट थिला एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करछि इनटू एंजियोटेंसिन 1 जोटा कि हमरा ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE जोटा हमरो लंग्स रो प्रोड्यूस हे गिरी आसुची सी कोन करूची हमरो कन्वर्ट कोची एंजियोटेंसिन 1 को इनटू एंजियोटेंसिन 2 जोटा की होची कोटे पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर ता जे की ब्लड प्रेशर को बढ़े की रखुची और ब्लड प्रेशर को बढ़े की रखिला बोली कहले आर काउंटर रे पुनी हमर ANF फैक्टर आसुची जोटा कि हमर आर्टेरियल नाट्रियोटिक फैक्टर ब्लड प्रेशर को कमेबा पई बोली एडा गोटे अलगा फेनोमेना एडा गोटे अलगा ठीक अछि बाकी ए टाइप रो हमर चले रास मेकैनिज्म आंसर हियर विल बी juxtaglomerular cells next question answer a fall in the renal perfusion pressure stimulates the secretion of ADH ANP renin erythropoietin a fall in the renal perfusion pressure stimulates the secretion of
रेनाल परफ्यूजन प्रेशर जतबेले लो हो जाउची सेतबेले हमर रेनिन रो सिक्रेशन टा देखा जाउची कोड देखा जाउची जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रो रेनिन रो सिक्रेशन टा देखा जाउची हैला जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रो रेनिन रो सिक्रेशन टा देखा जाउची नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 the juxtaglomerular apparatus mainly consists of the glomerulus and renal pelvis PCT and collecting duct vasa recta and renal capsule macula densa and the juxtaglomerular cells question number 16 it is macula densa and the juxtaglomerular cells हैला macula densa juxtaglomerular cells जोड़ा को JGA बोली कहा जाउची से हमर रेनिन सिक्रेशन करूची renin secretion coach. Next, which substance is normally almost completely reabsorbed in the proximal convoluted tubule? देखो हमर जो ultrafiltration ही थिला ultrafiltration रे सब किछि आसी थिला except RBC and plasma proteins. Plasma protein और RBC को छाड़ी देले सब किछि filtration ही आइथिला including glucose. Glucose मध्ये आसी जाइथिला आउ ग्लूकोज गोटे इमिडिया कंपोनेंट जोटा कि पीसीटी रे अराउंड 100% हमरो रीअब्सॉर्ब बैक हो जाउची अराउंड 100% पुणी से हमरो रीअब्सॉर्ब बैक हो जाउची एटा कोन कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब पचरची ग्लूकोज हैला ग्लूकोज 17 टा हबो ए 17 टा हबो ए ग्लूकोज नेक्स्ट क्वेश्चन आसा glucose normally appears in the urine when ADH secretion increases blood glucose exceeds the renal threshold GFR becomes 0 aldosterone secretion decreases जते बेले ग्लूकोज जते बेले हमरो यूरिन रे देखा जाउची से कंडीशन टा को ग्लाइकोसूरिया बोली कहै जाय ग्लाइकोसूरिया बोली कहै जाय आ ई कंडीशन टा ही हमरो डायबिटीज मेलाइटस रो कंडीशन टा डायबिटीज मेलाइटस रो कंडीशन टा जते ब्लड ग्लूकोज एक्सीड कर दिए रेनल थ्रेशोल्ड को जते कि हमरो लेवल रे ग्लूकोज हमरो रिलीज हबा कथा सेरा जते बेले एक्सेसिव अमाउंट रे होउची से कंडीशन टा हमरो कोन ना डायबिटीज मेलाइटस रो कंडीशन डायबिटीज मेलाइटस रो कंडीशन आ ए कंडीशन रे कोन ना इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाय इंसुलिन रो डेफिशिएंसी then next B question number 19 which nitrogenous waste product is commonly used for the assessment of the renal function रो assessment पई बोली ओ nitrogenous waste product ता सबुडु मोस्ट commonly used एटा होची क्रिएटिनाइन आ क्रिएटिनाइन टा को जानि देले आमे रीनल रो जो फंक्शन दा जो किडनी फंक्शन जो टेस्ट करा जाय सेटा को आमे असेस कर परबा आ क्रिएटिनाइन रे केमिति प्रोड्यूस होची इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मसल ब्रेकडाउन इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मसल ब्रेकडाउन हैला तो इडी हेगला हमर कोन ना करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 हैला ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 द मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज ह्यूमंस मानको पई बोली नाइट्रोजनस वेस्ट जो मेजर प्रोडक्ट ता कोडा देखो नाइट्रोजनस वेस्ट हमर तीन प्रकार थिला गोटे थिला अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड ठीक अछि अमोनिया हमर हाईली टॉक्सिक more amount of water is required for its removal more amount of water is required for its removal एटा होची हमर less toxic less amount of water is required for its removal हैला और यूरिक एसिड होची least toxic and it requires very least amount of water for its removal अमोनिया कथा जदि कहबा ताहले मोस्ट बोनिफिशियस आउ फ्रॉग रो जो टैडपोल डा सी हमर रिलीज करे अमोनिया यूरिया हेले अडल्ट फ्रॉग आउ ह्यूमंस एपटे हमर लीस्ट टॉक्सिक भितरे आसी जेबे के बर्ड्स रेप्टाइल्स लैंड स्नेल्स हैला एमाने समस्त आसी जेबे यूरिक एसिड भितरे इंसेक्ट्स हैला इंसेक्ट्स ए समस्त हमर यूरिक एसिड कॉर्पुलेशंस तो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कोन हबो यूरिया डी 20 यूरिया ठीक अछि किरण नेक्स्ट 21 which hormone produced by the kidney stimulates the erythropoiesis
एरिथ्रोपोइसिस हमर गोटे रीनल हार्मोन गोटे अछि, रीनल हार्मोन गोटे अछि सी हमर एरिथ्रोपोइसिस को इंड्यूस करे, सेडा होची एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइटिन द्वारा हमर रीनल हार्मोन ता हमर जो सिक्रेशन ता होची बा एरिथ्रोपोइसिस होची से जिनसटा एरिथ्रोपोइटिन द्वारा ही थाउची हैला। नेक्स्ट आसा क्वेश्चन नंबर 22, which substance is secreted by the renal tubules and plays an important role in the acid base regulation? Acid base regulation रे की हमर important role play करची, तमे देखो number of hydrogen ions indicates कि को substance रा बा को region ता केते acidic बा केते basic हैला। तो हमर depend करची number of hydrogen ions, number of hydrogen ions। तो एडा हो जे हमर आंसर, करेक्ट आंसर एडा जेबो करेक्ट आंसर हैला। डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, the approximate normal glomerular filtration rate in the healthy adult is 25 ml per minute, 60 ml per minute, 125 ml per minute, 250 ml per minute. It is 125 milliliter per minute. Yes, hydrogen ions 125 milliliter per minute. जोटा कि जते बड़े sum up करबा हमें per day basis रे देखबा, it is 180 liter per 180 liter per day. Next, which hormone promotes the sodium excretion when blood volume and the arterial pressure increase? Aldosterone, ADH, renin, atrial natriuretic peptide. जते बड़े हमरो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाउची, आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाउची, तबे आर्टेरियल नाट्रियोरेटिक पेप्टाइड बा आर्टेरियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर एडा हमरो रिलीज हैला, एडा हमरो रिलीज होची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, which sequence correctly represents the formation major processes involved in the urine formation? मेजर प्रोसेसेस भीतर देखो, फर्स्ट प्रोसेस रे हमर कोन होची, फर्स्ट प्रोसेस रे हमर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होची, जोटा की कोडी हे थाए ग्लोमेरुलस रे हे थाए, ग्लोमेरुलस रे हे थाए। तापरे सिलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन जोटा की पीसीटी रे होची, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम थिबा जो गुसेडी हमर मेजर रिअब्जॉर्प्शन रो जो साइट ता हैला, सेडा हमर पीसीटी रे एठी देखा जाउची। तापरे ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होची, ट्यूबुलर सिक्रेशन हमर लूप ऑफ फिनले रे होची, जोटा की डिसाइड करची यूरिन रो कंसंट्रेशन ता, एडा लूप ऑफ फिनले। तापरे से फ्लो करी एक्सक्रीट हेबा पई बोली कलेक्टिंग डट देकी जाउची, तापरे फाइनली रिमूवल ता हमर एठी देखा जाउची। तो एडी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। पुणी आमे सब गुडा को प्रोसेसेस रो साइट्स गुडा को मते देखि देबे कि को जगह रे होउचंती है ना, कि को जगह रे होउचंती। नेक्स्ट, the blood vessel that directly enters the glomerulus and supplies blood for filtration is the afferent arteriole, renal vein, afferent arteriole, interlobular artery. directly enter करछि glomerulus को। तो आमे जदि glomerulus रे देखिबा, glomerulus टा केमिति फॉर्म हिची, Bowman's capsule एडी हला, ठीक अछि। afferent arteriole आसिला, afferent arteriole आसिगिरी एठी हमरो टफ्ट ऑफ कैपिलरी रे से ये होची, तापरे हमरे ये एग्जिट करछि, ठीक अछि। तो एडा होची afferent arteriole, ये होची efferent arteriole, तापरे ये हला glomerulus, ये हला Bowman's capsule। तो ये जो ग्लोमेरुलस को हमर एंटर करूची, ये एडा होची afferent arteriole, डायरेक्टली जे एंटर करची ये हला हमरा afferent arteriole, ठीक अछि। तो ये हे गेला एंटर, डन, डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, compared with the afferent arteriole, the efferent arteriole generally has a larger diameter, smaller diameter, the same diameter, no connection with the glomerulus। माने से पचारि यार अर्थ होची कि हमर जो afferent arteriole अछि आ efferent arteriole अछि, ए दिडा भितर हमर फरक कोन, ए दिडा भितर मेजर फरक या हैला, एडा रो होची मोर डायमीटर, डायमीटर ता आरो अधिका हैला, डायमीटर आरो अधिका, एथि पई अधिका काहे ना एठी सब कंपोनेंट्स ओटा को थिला। तापरे ये हमर एठी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करी गिरी 125 मिलीलीटर पर मिनिट रो बेसिस रे फिल्ट्रेट गुडा को सब प्रोड्यूस कर देला। तापरे जते बेले से एग्जिट करची ना efferent arteriole देई गिरी, सेते बेले तार लेस डायमीटर हो जाउची, डायमीटर ता कम हो जाउची, डायमीटर ता कम हो जाउची, ठीक अछि। तो एठी हमर कोन हे जेबो, स्मॉलर डायमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, बी। यस चंदन, जैस्मिन, ठीक अछि। नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28,
Which of the following normally has the lowest concentration in the glomerular filtrate compared with the plasma? Sodium, glucose, water, plasma proteins. लोएस्ट कंसंट्रेशन रे के थाउची हमर फिल्ट्रेट रे जोडा कि म तमान को कहि सारथिली ऑलरेडी हमर जो वुमेन्स कैप्सूल रो ग्लोमेरुलस रो जो फिल्ट्रेशन दा होची सब फिल्ट्रेट हे जिवो खाली आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन्स ही नथिबे सेथे आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन्स ही नथिबे सेथे और बाकी सब जिंस थिबे ठीक अछि त एडी प्लाज्मा प्रोटीन्स एडी करेक्ट आंसर हे जिवो कि प्लाज्मा प्रोटीन सब कम अमाउंट प्रेजेंट होची या फिर नॉट नॉट थाउची नेक्स्ट the major driving force for a glomerular filtration is glomerular blood hydrostatic pressure, plasma colloid osmotic pressure, capsular hydrostatic pressure, tubular osmotic pressure. Major driving force for glomerular filtration. glomerular filtration ପାଇଁ ବୋଲି driving force କାହିଁକି ଆମେ filtration କରିବା ଦରକାର କଣ ଏମିତି ଆମର force ଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର filtration କରଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି the blood hydrostatic pressure. The glomerular blood hydrostatic pressure so blood रो particularly common hydrostatic pressure जगु हमरे कंडीशन टा देखा जाउची हैला नेक्स्ट बा क्वेश्चन question number 30 if the afferent arteriole constricts significantly the immediate effect is likely to be increased GFR increased renal blood flow decreased GFR increased filtration pressure A increased GFR afferent arteriole constrict हे जाय afferent arteriole हो हमर से arteriole जोटा कि डायरेक्टली हमर ग्लोमेरुलस को आसी एंटर करथला ठीक अछि तो जदी मो afferent arteriole constrict कर देबी जे कि हमर GFR को बनौथला तार डायमीटर भी बड़ थिला ताको जदी constrict कर देबी तो GFR और सते अमाउंट रा हमर प्रोड्यूस होबो कि GFR कमी जिवो ना नहीं तो डिक्रीज GFR होबो ना नहीं करेक्ट आंसर decrease the GFR na correct answer C will be the correct answer next which part of the nephron is primarily responsible for the fine regulation of the electrolyte composition of the urine Bowman's capsule distal convoluted tubule descending limb renal corpuscles which part of the nephron is primarily responsible for fine regulation of electrolyte composition of the urine fine regulation माने जति कि जहा सब ऑलरेडी रेगुलेशन हेबा कथा जाबा सिक्रेशन अब्जॉर्प्शन हेबा कथा से सब जिंस ऑलरेडी हे साची एबे आ जो मिनिमल एक रेगुलेशन दरकार पड़ुची सेडा हमरो डीसीटी रे होची हला डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ए जगह रे हमरो से बाकी बच्चा कुचा जहा सब रेगुलेशन देखा कथा से सब इठी हमरो देखा जाउची नेक्स्ट as a question number 32 the thick ascending limb of loop of Henle is often called as the concentrated segment water channel diluting segment na filtration segment ascending limb टा पचाची ascending limb in general हमरो salt ପାଇଁ बोली permeable थिला आउ water ପାଇଁ बोली impermeable थिला तो सेति ପାଇଁ बोली ए सेगमेंट को हमर कोन कहै जाय ए सेगमेंट को हमर कोन कहै जिवो एटा को हमर डाइल्यूटिंग सेगमेंट कहै जाय काहेकि ना थिक सेगमेंट हे कि तापर थिन हैला बेलगु ए टाइप रा थिक सेगमेंट हे गिरी तापर पुणी आउथरे एमपी थिन हैला बेलगु ए पोर्शन रे टिके टिके जहाले मते वाटर रो अब्जॉर्प्शन बा देखा जाउची बाकी ए जगह रे कंप्लीटली हमरो वाटर रो अब्जॉर्प्शन देखा जाउ नाही हैला तो एरी हमरो डाइल्यूटिंग सेगमेंट बोली एडा को कहि परिबा काहेकि ना थोड़ा बहुत भी हो एरी हमरो कोन ना वाटर रो परमिएबिलिटी टा टिके हेले मते देखा जाउची नेक्स्ट which transporter is particularly important for sodium potassium and chloride reabsorption in the thick ascending limb sodium potassium 2 chloride co-transporter sodium glucose co-transporter sodium H plus exchanger only H plus K plus ATPase H plus K plus ATPase thick ascending limb कथा पचारि छि जो सेरा हमर सोडियम पोटासियम तो रहिबो निहाती सोडियम पोटासियम तो रहिबो निहाती तो सोडियम पोटासियम रहिबो निहाती बोली कहले एडी ऑप्शन नंबर हमर सब अन्य ऑप्शन उडा सब एलिमिनेट हे सरलानी कांगरा सोडियम पोटासियम एका संगे केवल ऑप्शन नंबर ए रे ही अछि ता संगे हमर क्लोराइड रो मूवमेंट मते देखा जाय
क्लोराइड रो मूवमेंट मध्ये देखा जाउची जोटार कि हमर सोडियम पोटेशियम बा टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर एंजाइम द्वारा हमर एटी कोन जे ट्रांसपोर्टेशन ता देखा जाउचन. नेक्स्ट, urea contributes significantly to the high osmolarity of the renal cortex, renal capsule, renal artery, inner renal medulla. Urea contributes significantly to high osmolarity of the inner renal medulla. Inner renal medulla है ना, माने किडनी रो हमर जो पिरामिड्स गुड़ाक सेटा जो हमर मेड्यूलर पोर्शन रे प्रेजेंट अछि ए जिनसडा हमर सिग्निफिकेंटली मोस्ट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करूछि हैला. इनर रेनल मेड्यूला विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. व्हिच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग हाई कंसंट्रेटेड यूरिन? कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म करबा पई बोली को फैक्टर टा सबुर अधिक दरकार? कंसंट्रेटेड यूरिन पई बोली से जगह रे हमर वाटर रो कंटेंट कम रहबा दरकार आउ सॉल्ट रो कंटेंट टा अधिक रहबा दरकार. तो ए कंडीशन टा को स्टेटमेंट हमर जस्टिफाई करछि. एब्सेंस ऑफ एडीएच, increased permeability of collecting duct to water, complete inhibition of the sodium chloride reabsorption, increased GFR alone. कौन हम करेक्ट आंसर? आमे जदी permeability टा increase कर दबा water रो, water permeability increase कर देले more water reabsorption और more water रो reabsorption जेहेतु देखा जाउची से कंडीशन रे हमर concentrated urine रो मध्ये formation ई जगह रे देखा जिवो. कंसंट्रेटेड यूरिन रो फॉर्मेशन मध्ये जगह देखा जिवो हला. तो ए कंडीशन को देखि गिरी ए कंडीशन रे कर देले वाटर अधिक रो अधिक अब्जॉर्ब ही गला बोली कहले कम वाटर एक्सक्रीट आउट हबो, कम वाटर एक्सक्रीट आउट हला बोली कहले सेटा को ही हमर कोआ जाउजी कोन ना द concentrated urine is formed. Next, in the presence of high ADH level urine is generally ADH टा हमर कोन करछि ADH हमरो it is responsible for water रो reabsorption, वाटर रीअब्जॉर्प्शन पई बोली ये हमरो रिस्पांसिबल थाए. अच्छा, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन करूची एबे वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेला बोली कहिले मोर एंड मोर वाटर इज कंप्लीटली माने रीअब्जॉर्ब इनटू आवर बॉडी जहा द्वारा कि कंसंट्रेटेड यूरिन रो फॉर्मेशन एठी होची. तो क्वेश्चन को पचाला कि हाई एडीएच जदी अछि ताहले हमरो कोन यूरिन दा कंसंट्रेटेड फॉर्म हबा और रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम. काहे कि वॉल्यूम रे रिड्यूस हे जबो काहे कि ना low water level is found in urine. Low water level is found in the urine. Hala 36 टा होगा option number C. Next question. Which condition would most strongly stimulate the ADH secretion? Increased plasma osmolarity, decreased plasma osmolarity, increased blood volume, and excessive water intake. Which condition would most strongly stimulate the ADH secretion? जेतेबेले प्लाज्मा रो ऑस्मोलारिटी टा बढ़ी जिवो ना, प्लाज्मा रो ऑस्मोलारिटी टा बढ़ी जिवो हैला. प्लाज्मा रो ऑस्मोलारिटी रो माने होजे कोन सॉल्ट कंसंट्रेशन टा सॉल्ट ग्रेडियंट टा जेतेबेले से जगह रे बढ़ी जिवो से कंडीशन रे हमर एडीएच रो सिक्रेशन टा स्टिमुलेट होउथबो हैला. एडीएच रो सिक्रेशन टा स्टिमुलेट होउची. नेक्स्ट, यस, osmoreceptors that regulate the ADH release are primarily located in the cerebellum, medulla oblongata, hypothalamus, renal cortex. Osmoreceptors that regulate the ADH release. Osmoreceptors गुड़ा को जोड़ा कि ADH release को regulate करती कोडी प्रेजेंट अछि सेरा जेहेतु सेरा हमरा हाइपोथैलेमस जोड़ा कि मास्टर ग्लैंड सेही रिलीज हे कि हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर हे कि तापर से जाउची जगह को हाइपोथैलेमस रे हम तार osmoreceptors गुड़ा सब प्रेजेंट अछि. osmolarity gradient को सी osmolarity gradient को सी डिटेक्ट करी कि से अनुसार ADH रो सिक्रेशन से करूची हैला. चंदन 838 टा सी. वेरी गुड. नेक्स्ट, which hormone is released from the posterior pituitary but synthesized in the hypothalamus? हैला. डायरेक्ट क्वेश्चन दा एबे जस्ट करिले ऑस्मोरेसेप्टर कहार एक्टिवेट होची हाइपोथैलेमस रे एक्टिवेट होची की एक्टिवेट करची एडीएच एक्टिवेट होची. हाइपोथैलेमस रो रिलीज होची और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी रे आसीकरी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी रे आसीकरी हमर ये स्टोर होची न्यूरो हाइपोफाइसिस बोली जोड़ा को कहा जाउची हैला. आ ये एडीएच जो रिलीज करूची एडीएच जो रिलीज करची नॉट ओनली एडीएच आ गोटे हमते हार्मोन से रिलीज करची सी हैला ऑक्सीटोसिन. ठीक अछि. यस, एडीएच. नेक्स्ट, angiotensin 2 promotes sodium retention mainly by stimulating the release of ANP, ATH only, aldosterone, erythropoietin.
एंजियोटेंसिन 2 जोड़े गोटे पोटेंट भासो कंस्ट्रिक्टर टा बोली कहूचे आमे इट इज एल्डोस्टेरोन ठीक अछि एल्डोस्टेरोन जोड़ा कि हमर कोड होची एंजियोटेंसिन 2 को प्रमोट करची रास मेकानिज्म द्वारा एटा हमर चलौची ठीक अछि एल्डोस्टेरोन नेक्स्ट which of the following is a direct effect of the angiotensin 2 angiotensin 2 रो डायरेक्ट इफेक्ट टा कोडा angiotensin 2 जोटा कि गोटे भासो पोटेंट भासो कंस्ट्रिक्टर टा तो ये भासो कंस्ट्रक्शन करूची ऑब्वियसली हैला करेक्ट भासो कंस्ट्रक्शन करूची जोटा कि हमर रास मेकानिज्म द्वारा गोटे 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 एक्टिवेट ही चलता है नेक्स्ट arterial natriuretic peptide primarily acts on increased renin release increase sodium retention promote natriuresis increase the aldosterone secretion कौन होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 it promotes natriuresis जहा द्वारा कि हमर कोन होची वासो डायलेटर एडा देखा जाउची रास मेकानिज्म चली के हम बीपी बढ़ुची तापर बीपी बढ़िले एएनए फैक्टर रिलीज होची बीपी कम होची बीपी कमिले पुणी आथर रास चलुची पुणी बीपी बढ़ुची पुणी एएनए रिलीज होची बीपी कम होची एक रेगुलेशन रे चली थाउची नेक्स्ट which kidney structure receives urine directly from several collecting ducts before it enter into the renal pelvis renal papilla renal cortex glomerulus renal artery सब गुडा को हमर जो renal pelvis को एंटर करिया पूर्व सब कलेक्टिंग डक्ट रो जो रीजन टा हमर यूरिन को कलेक्ट फर्स्ट करूची से रीजन टा किए सेटा को हमर कहआ जाउचे कोन renal papilla हैला सब कलेक्टिंग डक्ट रो कॉमन मीटिंग पॉइंट होची renal papilla तापर renal papilla मिसी गिरी तापर हमर renal pelvis रे सी ओपन होचंती ये हला renal papilla ये हला कलेक्टिंग डक्ट ठीक अछि कलेक्टिंग डक्ट बा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ए नेक्स्ट 44 the tips of the renal pyramid project into the major calyces renal column minor calyces renal cortex tips of the renal pyramid जोड़ा कि हमर मेडुला पोर्शन रे हमर ओपन हेगी रहउची मेडुला पोर्शन रे जोड़ा प्रेजेंट अछि सेटा कहा एडो को सी हमर फेस करूची सेटा हम जनरली the tips of the renal pyramids projects into the yes it projects into the minor calyces ठीक अछि minor calyces आड़ को सी ओपन होची सेटु सी हमर प्रोजेक्ट आउट करिगरी आसुची नेक्स्ट renal column are extensions of the medulla into the renal pelvis cortex between the renal pyramid pelvis into the cortex capsule into the medulla only question number 45 renal columns are the extensions of जोटा कि हमर ए जो किडनी रो ए पोर्शंस गुडा गरी मेडुला प्रेजेंट अछि कॉर्टेक्स रीजन टा ए भीतर को मध्ये हम एक्सटेंड करछि ए पोर्शन टा को कहा जाउछि कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बा रेनल कॉलम्स बोली मध्ये कहा जाउछि तब कॉर्टेक्स बिटवीन द रेनल पिरामिड्स रो मझरे जो कॉर्टेक्स पोर्शन टा हम एक्सटेंड हेछि एटा को कहा जाउछि कोन ना रेनल कॉलम्स बा कॉलम्स ऑफ बर्टिनी नेक्स्ट which of the following is not normally a component of urine urea creatinine glucose uric acid urea creatinine uric acid एडा सब हमर एक्सक्रीटरी कंपोनेंट उडा को तो एडा तो यूरिन निहाती देखा जे बट ग्लूकोज इन सिग्निफिकेंट अमाउंट ग्लूकोज छोटो अमाउंट रे बा अल्प अमाउंट जदी प्रेजेंट अछि ताहले इट इज लाइकेबल ठीक अछि इट इज वायबल किंतु जते बडे एटा हमर एक्सेसिव अमाउंट रे प्रेजेंट होउची बोली कहले ए कंडीशन दा हमर ग्लाइकोसूरिया कंडीशन को डिनोट करछि ग्लाइकोसूरिया कंडीशन को डिनोट करछि तो सेति में बोली जोटा कि हमर डायबिटीज मेलिटस रो कंडीशन दा दिस शुड नॉट बी प्रेजेंट इन यूरिन नॉर्मली नेक्स्ट tubular secretion contribute
particularly to the elimination of hydrogen ions and potassium ions, oxygen and carbon dioxide, albumin and fibrinogen, red blood cells. Tubular secretion. Tubular secretion भितर आमर ए सब प्रोटीन कंपोनेंट गुड़ाक किसी देखा जीव नहीं. सिक्रेशन टा आमर जनरली देखा जाए कोठी हाइड्रोजन आयंस और पोटेशियम आयंस जहा द्वारा कि आमर यूरिन रो कंसंट्रेशन टा रेगुलेट हुए सेटा आमर रेगुलेट हेगरी बॉडी रे आमर कंसंट्रेशन यूरिन रो कंसंट्रेशन टा डिसाइड होछ. Next, which process allows the substances such as certain drugs and hydrogen ion to move from peritubular blood into the tubular fluid? Glomerular filtration, tubular secretion, tubular reabsorption, na osmotic filtration. Question number, option number B, tubular secretion, correct answer. Tubular secretion is the correct answer. Next, which statement about the normal urine is most appropriate? It normally contains large amount of plasma protein. It normally contains numerous RBCs. It normally contains significant amount of glucose. Its yellow color is mainly associated with the urochrome pigments. Normal कौन large amount of plasma protein न थाए, numerous RBC भी न थाए, glucose भी हमारे urine में न थाए. It is yellow in color काहें कि ना urochrome pigment उड़ा का सब present अच्छी होगी. Next, when the body is severely dehydrated, that which renal response is most appropriate? एक क्वेश्चन है समझता का पाई होमवर्क कमेंट सेक्शन रे आंसर लिखि के जणेबो है ना. कमेंट सेक्शन रे आंसर लिखि के जणेबो और नेक्स्ट सेशन रे बा नेक्स्ट क्लास रे को टॉपिक रे हम एमसीक्यू डिस्कशन करबा सेडा को मध्ये मेंशन करबो कमेंट सेक्शन रे. आज रो क्लास केमिति लागिला से जिंस मध्ये निहाती भाबरे कमेंट्स रे जणेबो. We will see you next time. Until then, जय जगन्नाथ समस्तंको.